Welcome to the class of English essay, and in this debate, we are going to talk about and as a topic that was asked in 2020, Pakistan global power dynamics and changing global power dynamics and Pakistan's foreign policy. Let's have a look at this outline. आपने जब भी ये टॉपिक फॉलो करना है तो आपने पहले एक स्टेप याद कर लेना है कि लास्ट पेज पे चले जाना है जो कि आपकी एग्जाम की कॉपी हो और वहां पर आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वो एक रफ आउटलाइन ब्रेनस्टॉर्म करनी हो। जब आपने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली हो तो उसके बाद आपका अगला काम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की इन चीज़ों के मैंने भी क्लैरिफाई कर लो। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ लेट्स से योर थीसिस स्टेटमेंट कि आपके ऐसे की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वन। सेकंड जो चीज के ऊपर आपने काम करना है ये कि ऑस्पेक्ट्स कौन से बनेंगे, थर्ड सब ऑस्पेक्ट्स के ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है, फोर्थ उन सब ऑस्पेक्ट्स को आपने प्रायोरिटाइज करना है कि विच सब ऑस्पेक्ट मस्ट बी पुट फर्स्ट। अब जब आप फेयर आउटलाइन बनाएंगे तो दिस इज द फेयर आउटलाइन आई हैव रिटन हियर एंड आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी फिलॉसफी ऑफ दिस। इंट्रोडक्शन के बाद आपने देखनी है एक जनरल रिमार्क। जिस तरह का टॉपिक हो आपने उस तरह की वोकैबुलरी, उस तरह का जॉर्गन, उस तरह की अप्रोच आपने सामने रखेंगे। आपने जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क है इट इज अगेन आप ये ना पूछें कि सर इट इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी। इट्स नॉट एब्सोल्युटली कंपल्सरी बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एडिंग लेट्स अ वैल्यू एडिशन इनटू योर ओवरऑल डिबेट। Let's say introductory remark हमने दिए Milan dialogue की that the matters of justice and morality hardly come to human affairs. The truth is that powerful gets what he wants and the weak grant what they must. थीसिस स्टेटमेंट काफी लोगों को नहीं लिखना आता, अक्सरियत को मैं कहता हूँ थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखना आता। थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली द इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट ऑफ योर मेजर आर्गुमेंट और मेजर अप्रोच ऑफ योर एसे। Thesis statement हमने लिखा है कि in the back of declining new world order, rising of regional power blocks and states, changing patterns of cooperation, competition and confrontation, and other changes in global power dynamics, Pakistan's foreign policy focuses on the cooperative regional security architecture, peace through economics, peaceful coexistence, multilateralism as the basis of interstate relations. It, however, faces challenges on geopolitical, economic, and geostrategic fronts, which must be addressed to secure Pakistan's national interest. अब थीसिस स्टेटमेंट की जो मेजर की है वो आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है कि भाई जो थीसिस स्टेटमेंट है इट मस्ट बी रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डिबेट यू एक्चुअली चूज अदरवाइज। यस, व्हाट टाइप ऑफ डिबेट यू अदरवाइज चूज, ओके, कौन सी साइड ऑफ द डिबेट को आप सपोर्ट करेंगे और क्यों सपोर्ट करेंगे। ओके, वंस यू आर डन विद दिस अप्रोच, मतलब आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख लिया तो आप नोट करेंगे कि जो थीसिस में आपके आर्गुमेंट हैं दे मस्ट हैव अ कोरिलेशनशिप विद द आर्गुमेंट्स दैट यू हैव आउटलाइंड इन योर आउटलाइन। फॉर एग्जांपल आप फिर लिखेंगे जो कि आपसे बात पूछी गई है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो जिसे हम कहेंगे लेट्स से टॉपिक, उसमें जो आपसे बात पूछी गई है। टॉपिक में आपसे क्या पूछा गया है, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। पहला सवाल ये पूछा गया है, इस साइड के ऊपर आपने ओनर्स डिफाइन करना है कि इसके ऊपर भी आपने बात करनी है। एंड देन यू टॉक अबाउट व्हाट आर चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, और आपने उनके ऊपर बात कर ली कि भाई व्हाट आर कंटेम्पररी ग्लोबल पावर डायनामिक्स। अब मैंने कसीर तादाद लोगों के ऐसे किए, सब लोगों ने महज इतनी बात की है कि देखें राइज ऑफ चाइना है, दिस इज चेंजिंग ऑर्डर, और फिर बायपोलरिटी से मल्टीपोलरिटी आ रही। अच्छा, फिर आप इसमें बात नहीं कौन सी कह रहे हैं, मतलब पहला आर्गुमेंट ये है कि अमेरिका का डिक्लाइन है, चाइना का राइज है, यूनिपोलैरिटी से बायपोलर और ट्राइपोलर वर्ल्ड में। भाई उसमें एनालिसिस में तो आर्गुमेंट वही है, व्हाट न्यू थिंग यू आर गोइंग टू ऑफर इन योर आर्गुमेंट्स। उसके लिए फिर मैंने ये ना 5 आपके लिए ग्लोबल चेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। प्लीज टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज चैलेंजेस। जब तक आप इन नई चेंजेस को जहन में नहीं रखेंगे, आई डोंट थिंक कि आपके लिए इस टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करना इतना आसान हो जाएगा। सो आपने पहली जो मेजर जाहिर सी बात है चेंज की बात करनी वो ये है कि वेस्ट लेड US dominated new world order is basically crumbling under its own weight and paving the way for the rise of Asia. Are you noting the phrasing? Are you noting the manner in which we have articulated the argument? काफी लोगों के इतने मतलब बिल्कुल बेसुरे तरीके से मतलब लिखे हुए थे आर्गुमेंट्स के, आर्गुमेंट की वर्थ ही खत्म हो जाती है। मसलन हमने देखे इसमें कितनी बातें कर ली। We talked about the West-led US dominated New World Order. We have a lot to analyze from 1991 to current dynamics.
and the rise of Asia, which is again a new phenomena. This basically symbolizes in what manner we must articulate this particular debate. Secondly, there is a realization that SU is going to be a vehicle for a geostrategic shift in global politics. और फिर इसमें आप जो है वो you can talk about the Asian heartland is increasingly being controlled by China and Russia, and this is something that is again a new analysis. First is related to the state actor analysis. The second is related to, let's say, the regional organizations related analysis. Okay, next thing is new balance of power is emerging on regional and global scale. And you can talk about many regions in Europe, in Asia, in Eurasia, in Africa, in Latin America, even Indo-Pacific region, and at global stage. So you have to formulate an argument that not only reflects to the main heading that, well, there are contemporary challenges into changes into global power dynamics. And all these regional changes actually have role in changing those global power dynamics. और फिर इसमें जब आपको लगे, एक और की आप याद रख लें कि जब आपको लगे कि यार आपका आर्गुमेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो यू मस्ट एड सर्टेन एग्जांपल्स इनटू दैट. जैसे आप कहें देखें चाइनीज लेड BRI एंड US लेड Quad Alliance to dominate Indo-Pacific region. अब अच्छा ये क्लियर हो गई कि अच्छा on one hand these are the regional changes, but at the same time they have a requisite effect on changing global power dynamics. Next is changing nature of warfare is basically changing the global power dynamics from old military-centric to new proxy and hybrid warfare to the biological terrorism. One thing you must remember है that your knowledge must be updated. आप अगर updated discourse नहीं लिख रहे हैं तो this is going to harm you. Updated knowledge is going to make or break your fortunes. ये चीज आप ध्यान में रख लें. और फिर एक पांचवा आर्गुमेंट्स मैंने कोई नहीं चेक किए, 50 ऐसे मैंने चेक किए एंड आई रिकमेंडेड देम दिस आउटलाइन कि आप इसमें नई चीजें तो ऑफर करें. 2020 में ये ऐसे हर उस बंदे ने उठाया था जिसे वैसे ही पाकिस्तान के बारे में पता हो या जैसे उसे दुनिया के कोई 193 ममालिक में से चंद के नाम याद हो, कोई नॉर्थ कोरिया याद है, वो आर्गुमेंट यहाँ पे लिख लिया. ऐसे नहीं होता भाई, आपने थोड़ा सा एक ऑर्डरली मैनर में चीजों को लेके चलना होता है. A new techno-economic world order is making to redefine global power dynamics. अब देखें ये आर्गुमेंट पहले लग रहा है कि शायद ये क्लियर नहीं है. अब मुझे क्लियर बिकॉज आई हैव रिटन, बट यू हैव टू राइट इन लाइन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनर. यार अगर उसे क्लियर ना हो तो देन ईड एन एग्जांपल कि अच्छा trade wars, artificial intelligence and punch. Okay, come on, now this is clearly understandable. So you need to hit that very idea. What are contemporary global power dynamics? And once these dynamics are hit, it would be easy for you to outline this whole debate in forthright manner. Then what is Pakistan's foreign policy? सिर्फ ये नहीं लिखना. What is Pakistan's foreign policy in backdrop of shifting sands of global power dynamics? You have to be very clear and choosy in choosing the sentence structure, and that must be borrowed from the outline. The more it is borrowed from outline, the easier and the clearer it would be for the examiner that you guys are staying relevant, because there is a tendency not only the aspirants to actually dilute their debate into something that is otherwise irrelevant. At the same time, this tendency does exist in the mind of examiner कि यार उसे अचानक से लग रहा होता है ना कि this is something that is not related to otherwise the larger part of the debate. He just quickly loses interest into your overall discussion. What your job is as an aspirant is to convince him that you are not reading something that must be ignored. You are reading is something worth writing, जिसको आपने जो है वो ध्यान में रखना है. And this is something जो कि आपके knowledge base को भी इजाफा कर रही है, आपके knowledge base में भी इजाफा कर रही है. Clear on this? फिर हम आगे बढ़ते हैं. बाकी फिर Pakistan envisages friendly, cooperative and regional security architecture, free from political disputes, military competition and strategic competition. There is a realization of peace through economics. और उसके हमने मिसाल दी materialization of BRI and CPEC to the full potential and regional, let's say, technological revolution की आपने बात की. Avoidance of military conflict, peaceful coexistence and multilateralism as basis of interstate relations, stronger Pak-China strategic partnership,
Pakistan facilitates peace in Afghanistan in order to put an end to Afghan sufferings and end state-sponsored terrorism in the region. Is sponsored by India. India के ऊपर आपने you have to be stiff, ठीक है? Because India has been threatening Pakistan. In order to lift curfew in Kashmir and find peaceful resolution of Kashmir as per UN Charter, Pakistan is doing everything to demonstrate India, its capability, will, and resolve to surprise it, managing Sino-US rivalry and Iran-Saudi feud, uske baad fighting Islamophobia at the end, fighting Islamophobia to the end, and Pakistan is playing a larger role in multilateral bodies to fight chronic evils like terrorism, separatism, and extremism. So what are certain challenges faced by Pakistan on foreign policy front in changing global international power structure? We have a lot of challenge. Again, the use of jargons must be dictated by the topic. Let's say the threat of the Thucydides trap is a major challenge in maintaining balance and major power relations. You must, yes, Godfather, you must offer, make him an offer he can't refuse. And that offer can actually be made through these particular tactics. Okay? अच्छा, उसके बाद then you should talk about Afghan-centric US ties and Indo-US nexus. ये जो है, they pose greater threat to Pakistan's safety, security, and stability. Vested interests are tightening the noose around Pakistan in FATF. Emergence of multiple order has its own complexities. Financial institutions, unsettled issues at home, weaken Pakistan's ability to actually have a muscular foreign policy. Polarized politics, fragile civil democracy. एग्जामिनर रिपोर्ट में एक बात की गई है कि मेजॉरिटी के पास जो सॉल्यूशंस हैं वो आउटडेटेड हैं. दे डू नॉट हैव इनोवेटिव सॉल्यूशंस और दे डू नॉट हैव ability to articulate solutions in such a manner that they look innovative. For example, you can say, you can talk about this particular thing. What should be Pakistan's foreign policy to promote and protect its national interest in rapidly changing global order? Again, your focus must be on the keywords that have been otherwise been discussed in your topic. इनके ऊपर आपका जो focus है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए. जैसे पहली चीज, frank civil military dialogue and joint institutional response to countries' challenges. It is the need of hour. Setting the house in order, because foreign policy is a reflection of domestic policy. Then you must talk about new and constructive theme, और वो क्या होना चाहिए? Unequivocal rejection of any form of militancy and firm commitment to regional cooperation and its a trade. फिर उसके बाद आपने उसकी मिसाल भी देनी है कि एज स्पाजवा डॉक्ट्राइन एनवाइसेज कि भाई jihad is a prerogative of the state. But then you can talk about maintaining principled stance over Kashmir while focusing dialogue with India. You know, आपने कभी भी extremist approach नहीं देखनी. As a civil servant, you must be open to new things. You must be open to dialogue. You must be open to mediation. But at the same time, you should not be actually compromising Pakistan's national interest, and this is something that you need to take into account, and this thing must be taken into account. Then you can talk about, say, to do more American imperial tone and working for peace in the region. And last but not the least, rehabilitated Pakistan's international standing, once a hotbed of terrorism, to favorite tourist destination all around the world. Guys, are you noting this thing? Okay, then what are the major takeaways from this? यहाँ पे outline खत्म हो जाती है. So what are major takeaways from this particular phenomena? A, your selection of the topic must be governed by your area of strength. 1. Number 2, if you have selected a particular topic, you must come to terms with that particular topic. और आप उस topic के साथ justice तभी कर सकते हैं once you imply the same jargon that is otherwise required for that particular topic. और फिर आप टॉपिक का burden of proof समझ लें कि आपसे पूछी क्या चीजें गई हैं. चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स आपसे पूछी गई हैं एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पर उसमें से आपने डिबेट को वाइडन करना है. I feel sorry for the aspirants जिन्होंने informal economy the way forward पढ़ा था. उन्होंने ऐसे attempt इस तरीके से किया. They don't know. They don't know about informal economy, and even if they know, उन्होंने ऐसे cause effect solution ऐसे बना दिए. Well, what is informal economy? Historical background, causes effect solution. Come on, guys.
You need to come out of this whole dilemma, is business dilemma, historical dilemma, I would otherwise say, कि अभी भी पुराने रवायात, ये जो तकलीद है उस पे आप चल रहे हैं। जैसे इकबाल ने कहा था, तकलीद से नाकारा ना कर अपनी खुदी को। आप ये पुराने ये जो रीतें रस्में, जैसे कोई इन्नेट है 7 फेरे आपने देने कॉज इफेक्ट सोल्यूशन के ऊपर, उसके बगैर आपने आगे मूव नहीं करना। Anyway, so this is all about this particular topic, and you can ask any question you feel relevant to this. Thank you so much.